ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानं पीतांबर करचित शंख चक्र कौमोदकी सरसिजं राधा सहायमति सुंदर हासं वातालक्षमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्य मानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यञ्जनाना एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुत्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यां ममरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यं तत्स्वच्छद्वाक्यदच्छादित परसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमति सुग्रहे विग्रहे ते निष्कंपे नित्यपूर्णे निरवधि परमानंद पीयूष रूपे निर्लीनानेक मुक्तावली सुभगत में निर्मल ब्रह्म सिंधौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कामपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठ रूपं तत्ते प्रत्यक्रधारादर ललित कला यावली केलिका लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्ण पुण्यवतारम् लक्ष्मी निशंकलीला निलयनमृतस्यन्द संदोह मंतः सिंचत् संचिन्तकानां
वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नो चेत् जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं तद्वपुः छिद्रसार्द्रम् नेत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निशेषलभ्यो निरवधि कपलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं चक्रवाटीद्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वविशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्या त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणा थारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिल विदसिन क्वापि ते संगवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्द मुख्य श्रेयोसि इति श्रीमन्नारायणीये श्री भगवन् महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्री भगवत् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकब्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुल नेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्पादुचतुष्क सङ्गद गदा शङ्खारि पङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालं विनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरम् माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोऽन्यः
प्रेमस्थैर्यमयाद चापल बलाच चापल्यवार्तोधभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्प्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयादृशोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदः ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य नित्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतचरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोध पदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरम् वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। श्री नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्ति प्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चारन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परमम् अहन्तान्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेत् यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्
भवत्पादाम्भोजस्मरण रसिको नाम निवहान् अहङ्गायङ्गायम् गुहजन विवित्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनिभृताम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूढात् मगतयः तत्पादाम्भोजस् स्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्बाध परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः हिम परम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेष क्लेशौघं न खलु हृदि सन्देह कणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रत्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुचरणयुग्मन् धृतरसं भवक्षेत्र प्राप्तौ परमपि च ते पूजन विधौ भवन्मूर्त्यालोके नयन मथते पाद तुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभ चलिते मामक हृदि त्वदीयं तद्रूपं परम सुख चिद्रूपमुदीयात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवान् मरुत्केहाधीश त्वयि खलु परां चोपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावद्धिया दहन्तावत् देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूप वर्णनं भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।